Good evening, everyone. Over the past 1 month, the market has experienced significant volatility with a reversal of the previous day's trade occurring almost daily over the last 20 days. We saw the lowest levels of 23,900 and the highest high of 25,100 during the month. And in fact, that has sent the market in a range for extended period. The fourth quarter results concluded on a subdued note, on which Amarjit will discuss in details during the webinar. However, there has been notable improvement in domestic macroeconomics, which is contributing to the positive outlook for the market. Although flows from the global markets have been erratic, the dollar, crude oil, and bond yields have remained stable. इन ब्रीफ काफी मिक्स सेंटिमेंट रहा लास्ट मंथ का, और हमें लगता है कि ऐसे पर्टिकुलर सिनारियो में हमें काफी अपडेटेड रहना पड़ता है. वी नीड टू बी प्रॉपरली अपडेटेड, एंड फॉर दैट स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड लिसन टू अमरजीत. ओवर टू यू, अमरजीत. Thank you, Shrikant sir. So we will start the PPT. Okay, so next PPT. Okay, so in this PPT, we will talk about the global market, Indian market, and high frequency indicator, and also we will share our outlook and valuation and some stock ideas. So we will start from the global market. So first, uh, अभी जो एज ऑफ नाउ ग्लोबल इंडाइसेस हैं उसके परफॉर्मेंस देखोगे लास्ट मंथ में मई में, सो इट वाज लाइक clearly US has outperformed if you'll see compared to other global market. So if you'll see Nasdaq Composite, it's generated 9 or approx 10% return, and Dow Jones 3.8%, S&P 500 6.2%. So these rally came because of that a relief rally. It was global equities extended the relief rally on the expectation of steady ramp down of US tariff. जो यूएस टैरिफ का टॉक चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ नेगोशिएशन हुए यूएस और चाइना के बीच में, तो वहाँ पे एक रिलीफ रैली हुई. इसकी वजह से इस मंथ में मई में काफ़ी अच्छा स्टॉक ने परफॉर्म किया है, इंडेक्स ने परफॉर्म किया है यूएस का. ऑन द यूरोपियन फ्रंट, इफ यू सी द मार्केट हैज जनरेटेड अ पॉजिटिव रिटर्न सेम फॉलोइंग द यूएस मार्केट. सो FTS 100 index generated almost 3% return. CAC 40 generated 2.8% return. DAC, it was around 7.4%. On the Asian market front, we have seen a strong rally again. Nikkei 5.3, Kospi 5.45, Hang Seng 5.3, and Taiwan index 5.5. Or Shanghai Chinese market generated 2.1%. However, we have seen compared to global market, Indian market has underperformed in month of May. If you'll see, the Nifty generated 1.2%, Sensex 1.5%. So Indian market were volatile in the early May because of the heightened tension of India and Pakistan, but they recover after both countries agreed to ceasefire. However, our small cap and mid cap index has outperformed. So in this particular month, mid cap index has generated 6.1% return, and small cap generated almost 9% return. So next slide. ऑन द सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स एंड रियलिटी एंड मेटल एंड माइनिंग हैज जनरेटेड अ गुड रिटर्न, टॉप गेनर, एंड FMCG एंड यूटिलिटी सेक्टर आर लूजर इन द May month. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो हेयर वी विल टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट. अगर हम देखें तो यूएस फेड के बारे में बात करें, इन मंथ ऑफ मे FMC मीटिंग हुआ था. द फेड केप द फेड रेट अनचेंज, विच इज अराउंड 4.25 से लेके 4.5 का रेंज है. द बैकड्रॉप ऑफ द इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी, विच हैज लेड टू हाई इन्फ्लेशन, स्लो इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट. इसके वजह से देर वॉज नो क्लैरिटी, जो रेट अनचेंज रहा. एंड फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट था, रिएटेड हिज स्टैंस नो हरी टू rate cut, as the Fed plan to analyze the economy ahead of the potential rate cut.
सो एज ऑफ नो वी डोंट सी दैट कि अभी नियर टर्म में कोई रेट कट होगा, क्योंकि मार्केट, यूएस ग्लोबल मार्केट, आई मीन स्पेशली यूएस मार्केट काफी वोलेटाइल है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा रिड्यूस देयर बेंचमार्क पॉलिसी रेट बाय 25 basis, which is around 4.25% now, due to the muted economic growth amid headwinds from the US trade tariff. अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो यूएस सीपीआई ड्रॉप 2.3%, द लोवेस्ट सिंस फेब 2021. दिस इज बिलो 2.4 एक्सपेक्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट एंड डिक्रीज फ्रॉम द 2.4 रिकॉर्ड इन मार्च। तो यूएस इन्फ्लेशन थोड़ा म्यूटेड रहा है, नीचे रहा है। एंड अगर हम यूरोपियन की देखें तो इन मई में इन्फ्लेशन इन द यूरोप जोन ईज्ड 1.9% इन द May to the lowest level in 8 months, back below the European Central Bank's target 2%, and further raising expectation for the another rate cut going ahead. तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके अभी जो मीटिंग होगी यूरोपियन जोन की, तो इस मंथ में, तो वहाँ पे भी एक हो सकता है कि रेट कट आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अगर हम देखें तो इंडिया का इन्फ्लेशन इट वाज केम अराउंड 3.2% इन अप्रैल, एंड मार्च से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, मॉडरेट हुआ, बिकॉज कंटिन्यू मॉडरेशन इन द फूड प्राइसेस, और कोर इन्फ्लेशन ड्रिवन एलिवेटेड लेवल, बट ड्रिवन बाय द पर्सनल केयर्स एंड पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स। सो बेसिकली कोर इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर है बट स्टेबल है। इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि हमने कंसिडरिंग दिस मंथ, अप्रैल मंथ इन्फ्लेशन, हमने थोड़ा लोअर किया है अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ FY26 इन्फ्लेशन का, विच इज अराउंड 3.5%, एंड एक्सपेक्टिंग 4.2% इन FY27, एज्यूमिंग कि मानसून नॉर्मल रहेगा। अगर मानसून नॉर्मल रहेगा तो ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से हमारा इन्फ्लेशन स्टेबल या कूल होता रहेगा, एंड विच विल गिव द रूम फॉर अ रेट कट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर FY26 75 to 100 basis point rate cut. Next, next slide. So now we will look at the high frequency indicator. So GST collection बहुत अच्छा नंबर आया है मई में. So it was reach around 2.1 lakh crore, and which is showing the growth of 16% year on year. And अगर हम देखें तो this is second consecutive month GST collection has crossed 2 lakh crore, and which is showing the economy movement strong. अगर जीएसटी कलेक्शन का नंबर अच्छा आता है तो ये मूवमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटर है। यहाँ पे दिखता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, इसके वजह से ये नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम आईआईपी की नंबर की देखें तो आईपी नंबर स्लो टू 8 month लो, विच इज अराउंड 2.7% इन द अप्रैल 2025, and the decline was attributed toward the weaker performance in the mining, manufacturing and electricity sectors. अगर इंडिया का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आउटपुट की बात करें तो इट वाज स्लोड अगेन सिग्निफिकेंटली, विच इज अराउंड 0.5% एंड इन द अप्रैल, एंड द शार्प ड्रॉप फ्रॉम द 4.6% ग्रोथ रिकॉर्ड इन द मार्च। सो मेनली अगर हम देखें तो नंबर्स सब्स्टिट्यूट रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन ग्रोथ होता है यहाँ पे इंडस्ट्री का, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, रिफाइनरिंग हो गया, यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे थोड़ा स्लो था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सीमेंट में देखें, कोल प्रोडक्शन, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ग्रोथ था। ट्रेड डिफिसिट की बात करें इंडिया में, अप्रैल इट वाज वाइडनिंग फ्रॉम मार्च लेवल, विच इज अराउंड $2 to 26.4 billion, and which is led by the sharp fall in the non-oil exports, and service trade surplus remain broadly, which is around $18 billion, and we maintain our 26 current account CAT to GDP around approx 1%. Earlier it was 0.7% in 2025. सो इस मंथ मई मंथ में जीडीपी नंबर भी आए हैं, फोर्थ क्वार्टर का नंबर, विच वाज वेरी गुड नंबर, वो द आर एक्सपेक्टेशन नंबर केम अराउंड 7.4%, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग 7.1%, सो विच वाज गुड नंबर, एंड दिस वाज लेड बाय मेनली बाय द इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एट अराउंड 9.4%, एंड हमने यहाँ पे वी एक्सपेक्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ अराउंड 6.2% in FY26 and 6.5 in the FY27. Next slide. ओके, सो फोर्थ क्वार्टर का नंबर आया है, और अगर हम नंबर पे बात करें तो इफ यू सी
The fourth quarter FY25 earnings season was been lackluster with the net income of KE, our coverage, Kotak coverage inverse, grew by 8.2% year on year compared to our expectation was 0.8%. And the bulk of the net income bit was driven by the banks. वहाँ पे growth दिखा downstream oil marketing companies and higher than expected other income. And on the if you'll see on the net income निफ्टी 50 का अगर देखें इंडेक्स का तो इट वाज अराउंड 3.7% ग्रोथ एंड which is 3.8% ahead of our estimates and mainly driven by the 59% beat in the SBI की वजह से ये नंबर पूरा चेंज हुआ है एंड एबिटा लेवल पे मोर लेस इट वाज इन लाइन विद आवर एस्टिमेट नेक्स्ट स्लाइड So, in this quarter, fourth quarter effort 25, some sector was positive, above expectation, some was negative. So, अगर हम revenue front पे देखें, तो banking, real estate and retailing and oil and gas consumer and transportation, this sector was positive, surprise किया. और अगर हम देखें consumer durable, gas utility, commercial and professional service, capital goods and electronic manufacturing services, these are the sector underperform बिलो देन आवर एक्सपेक्टेशन. अगर हम एबिटा फ्रंट पे देख ले तो रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेट, ऑयल एंड गैस एंड फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन्होंने एबिटा पे अच्छा इंप्रूव किया है, एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा दिया है. और अगर हम दूसरी तरफ देखें जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, कमोडिटीज, केमिकल में गैस एंड यूटिलिटी, आईटी एंड ऑटोमोबाइल एंड स्पेशलिटी केमिकल, दीज आर द सेक्टर विच अंडर परफॉर्म. पैट फ्रंट पे अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, होटल एंड रेस्टोरेंट एंड मेटल एंड माइनिंग, these are the company has performed good on the bottom line front. And some sectors which has underperformed on the bottom line front is commodity, chemical, fertilizer and agriculture, chemical and electronic manufacturing services, gas utility and telecommunication services. These are the sector has underperformed. So next slide. अगर हम आउटलुक वैल्यूएशन की बात करें, सो हमें पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द ग्लोबल, इन द वर्ल्ड, राइट. और लॉन्ग टर्म स्टोरी हमारा इंटैक्ट है और कंटिन्यूसली हमारे आगे जाके ग्रोथ आता रहेगा. बट अगर हम नियर टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास नियर टर्म में अभी मॉनसून एक नियर टर्म में जो है एक ट्रिगर है बड़ा. और एज पर द आईएमडी वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ना जो मॉनसून है वो नॉर्मल होगा. सो आईएमडी हैज सेड दैट साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर द इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू बी अबव नॉर्मल एट 106% लॉन्ग पीरियड एवरेज विद द मॉडल एरर ऑफ ±4%. सो इसका मतलब यह है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनसून नॉर्मल होगा तो बहुत सारे चीज़ें, मॉनसून अगर नॉर्मल होगा तो रूरल में इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कंजम्पशन में इम्पैक्ट होगा रूरल साइड में. एंड इन्फ्लेशन नीचे जाएगा और इन्फ्लेशन का मोमेंटम नीचे की तरफ बना रहेगा और उसकी वजह से रेट कट आएंगे. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 75 to 100 बेसिस पॉइंट का नेक्स्ट ईयर रेट कट आएगा. और अपार्ट फ्रॉम दैट लोअर कमोडिटी प्राइसेस विच विल बूस्ट द सेविंग फॉर द गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड, और जिसके थ्रू एक इकोनॉमी में एक स्पेंडिंग आएगी, कंजम्पशन बूस्ट होगा. सो ओवरऑल ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए. और हम देखें तो निफ्टी के अगर अगर हम बात करें तो यहाँ पे निफ्टी के लिए हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो ईपीएस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1128 रुपीज FY26 का और 1300 फॉर द FY27. सो अगर वैल्यूएशन पे अगर हम देख ले तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वैल्यूएशन अभी जो है एज ऑफ नाउ FY26 का वैल्यूएशन 21.9x है और FY27 में 19x है. एंड करंटली अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वी बिलीव दैट मार्केट आर ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एंड वी सजेस्ट द इन्वेस्टर टू अडॉप्ट द कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू द मार्केट. और स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जब भी स्टॉक गिरे तो वहाँ पे एवरी डिप में हमें अच्छी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टॉक हो जिसका अच्छा बिजनेस मॉडल हो, उसको हमको एक्यूमुलेट करना चाहिए. एज ऑफ नाउ हम लोग वीएफएसआई में पॉजिटिव ऑन द वीएफएसआई एंड रियलिटी एंड स्पेशली इन द बीएफएसआई हमको एनबीएफसी अच्छा लगता है तो हम उसमें देख सकते हैं. और अभी अगर रिस्क साइड में देखें तो ग्लोबल स्लोडाउन या रिसेशन आया तो ये पूरा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए. और कमोडिटी प्राइसेस अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होगा और इकोनॉमी के लिए अच्छा भी नहीं होगा. और जो पॉलिटिकल रिस्क जो अभी बना हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो ओवरऑल मार्केट को नीचे लेके जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. सो ये पी चार्ट है हिस्टोरिकल और अभी देख सकते हो ये जो रेड में है वो हमारा पी है
और वो लॉन्ग टर्म एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए हमने बोला है वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और हमें थोड़ा सा अच्छे शॉर्ट स्टॉक में हमें आइडेंटिफाई करके रखना है। जो हम रिकमेंड करते हैं आप उसको देख सकते हो, और वहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बना सकते हो ओवर द पीरियड टाइम, जैसे स्टॉक करेक्ट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हो, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने के पॉसिबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। So these are the our side, and apart from that, we have some few stock recommendations. So we will, I and my colleague will explain. So next up. So Gravita is India. So I'll explain this, and the target is almost 2,175, and we have an ad rating on that. So this stock is we like because Gravita is in the recycling business and involving the lead recycling, aluminum recycling, plastic recycling, और इनका 85% रेवेन्यू लेड रिसाइकलिंग से आता है। और इसमें अभी एज ऑफ नाउ 35% अप्रोक्स उनका मार्केट है ऑर्गेनाइज प्लेयर का, और बाकी का बैलेंस जो 65% है अनऑर्गेनाइज का मार्केट है। इवेंचुअली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा आएगा, मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, स्पेशली फ्रॉम ऑर्गेनाइज साइड, क्योंकि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स विल गेन द मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज, क्योंकि कुछ नियम आए, रूल आए बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट 2022, और जिसके थ्रू जो भी ओईएम है जो बैटरी सेल करती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो खराब बैटरी उसको कलेक्ट करे और उसको रीयूज करे, रिसाइकल करके रीयूज करे। इसकी वजह से यहाँ पे जो प्लेयर हैं ब्रांडेड प्लेयर लाइक ग्रेविटास इंडिया, यहाँ पे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो रिसाइकल करके ये सारी चीज़ें इस ओईएम्स को बेच सके। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जब भी मार्केट यहाँ पे अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो ग्रेविटास इंडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टू कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है, इंडस्ट्री में ग्रोथ होता है, तो आपके लिए कैपेसिटी भी होना चाहिए। अभी एज ऑफ नाउ अगर कैपिटल्स का कैपेसिटी देखोगे तो ऑलमोस्ट 3,34,000 3,34,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है, और दे आर ऑलमोस्ट डबलिंग, बिकॉज उनको भी पता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री ग्रो करेगा और हम ब्रांडेड प्लेयर है तो हमें एक्सपेंशन का फायदा मिलेगा। तो दे आर राइट टाइम, दे आर एक्सपांड राइट प्लेस पे हैं और राइट टाइम पे एक्सपांशन कर रहे हैं दो कैपेसिटी। तो कुछ टाइम में इनका कैपेसिटी एक्सपांशन हो जाएगा और कैपेसिटी आ जाएगा, और जिससे इनको ग्रोथ मिलेगा। तो अभी एज ऑफ नाउ देखोगे तो उनका जो भी लेट लेट रिसाइकलिंग कैपेसिटी है मुंद्रा में उसको एक्सपांड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दे आर गोइंग इन द रबर एंड लिथियम रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, वो भी बूस्ट करेगा ग्रोथ को। और दे आर स्केलिंग ऑपरेशनल इन द इंटरनेशनल लोकेशंस, एंड ऑल्सो वो पेपर में भी जा रहे हैं, रबर भी जा रहे हैं, जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। सो ओवरऑल ग्रेविटास के लिए आगे के साल काफ़ी अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट। So, apart from that company has also a strategy to increase their margin. So as of now, whatever the company is selling the product, 40% come from the value-added product, and they are planning to increase from the 40% to 50%, which will enhance the margin for the company. So एक अच्छी strategy, and they are looking for that. So this will enhance the bottom line. We are expecting 25% and almost a top line and bottom line growth over the next few years, which is a strong growth, and also with the strong ROE, 19%, 18 to 19%. So as of now, stock almost 27, 20, 28 के multiple पे चल रहा है based on the price volatility. So on the 27 EPS पे, so वैल्यूशन भी ठीक है, रिजनेबल है, ग्रोथ स्टोरी है, नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये अगर स्टॉक थोड़ा भी करेक्ट होता है तो यहाँ इस लेवल से हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। सो ओवर टू पंकज। Thank you, Amarjeet. So, good evening, everyone. So, the next stock that we are discussing is Praj Industries, जहाँ पर हमारा buy view है and we have a fair value of 700 rupees. सो प्राज इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए ये कंपनी काफ़ी अलग है इन विजावी द अदर कैपिटल गुड्स कंपनीज एंड ये जो है कंपनी इट्स फोकस्ड ऑन द टेक प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर बायो एनर्जी सेगमेंट। सो बेसिकली जो ग्रीन एनर्जी साइड पे इसका पूरा फोकस है। एंड अगर पास्ट 4-5 years देखेंगे तो गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा रहा है ऑन द इथेनॉल ब्लेंडिंग साइड, and Praj is the major player in the blending program. In fact, if you look at the 1G ethanol जहाँ पर major opportunities अभी आई थी वहाँ पर प्राज का market share was more than 60%. So that was the biggest driver for the company in terms of
revenue growth for last few 4-5 years. रिसेंटली हमने थोड़ा सा स्लो डाउन देखा है बिकॉज अभी 1G इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है, इथेनॉल ब्लेंडिंग इनफैक्ट वी हैव रीच्ड 20% mark. But going ahead, of course, there are a lot of other opportunities apart from the ethanol blending. Even government is talking about 27% blending or 30% blending in next 3 to 5 years. So that will also open up more opportunity for Praj. Uh, Apart from ethanol blending, CBG, जो compressed biogas है, that is going to be the big opportunity for the company. यहाँ पर ऑफ लेट कंपनी ने 2 पायलट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग विद सम ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट्स. उन्होंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हैं फॉर द कॉर्पोरेट्स. तो यहाँ पर इन द रिसेंट टाइम दे हैव इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द सीबीजी स्पेस. इसके अलावा जेनेक्स जो कि प्राज का इंजीनियरिंग बिजनेस है, दैट इज रफली 20% ऑफ द बिजनेस. बायो एनर्जी इज 70% एंड इंजीनियरिंग इज रफली 20% ऑफ देयर ऑर्डर रेवेन्यू. यहाँ पर कंपनी काफी नई चीजें कर रही है, लाइक दे आर लुकिंग एट एनर्जी ट्रांजिशन एज एन अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर. तो यहाँ पर जो प्राज जेनेक्स है उन उसमें दे विल बी डूइंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. सो यहाँ पर कंपनी को अप्रूवल मिले हैं कुछ ग्लोबल प्लेयर्स से. सो दे आर एक्सपेक्टिंग दिस बिजनेस प्राज जेनेक्स टू स्केल अप फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ FY 26. So that will drive its revenue, overall revenue going forward because इसमें पोटेंशियल जो है करीबन 2,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है. सो आउट ऑफ अभी करेंटली कंपनी का 3,500 करोड़ का रेवेन्यू, 2,000 करोड़ additional potential that will come from GenX. So that is going to be a big for the company. Apart from that, the company is also looking at a bioplastic as an opportunity, and they have even done some JV with global majors like ThyssenKrupp and all. So यहाँ पर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है. अगर करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी का करीबन 4,300 करोड़ का ऑर्डर बुक है. So that is also giving growth visibility for next year. The company is guided for double-digit kind of a growth. इवन द मार्जिन्स की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो मार्जिन थोड़ा सा सबड्यूड रहा था बिकॉज इनका जो प्राज जेनेक्स का प्लांट जो ऑपरेशनल हुआ था वहां से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं आया था. So in this year, the company is expecting very good traction from GenX, so that will also help them in growing the margins for this year. So this year, the company is expected to have more than 10% kind of margin. इसमें जो हमने वैल्यूएशन किया है DCF बेसिस पे किया है एंड ये हमारा जो 700 रुपए का जो टारगेट प्राइस है दैट इम्प्लाइज रफली 35 टाइम्स ऑन द फॉरवर्ड अर्निंग्स. करंटली स्टॉक कुछ 24-25 टाइम्स ऑन FY 27 अर्निंग्स पे चल रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो जैसा अगर फ्यूचर की ग्रोथ ड्राइवर की बात करेंगे तो डीकार्बोनाइजेशन जो है, अगर वी आर ग्लोबली वी आर एक्सपेक्टिंग दिस होल वी वांट टू डीकार्बोनाइज एंड वांट टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड. सो इंडिया का जो टारगेट है बाय 2070 जीरो कार्बन एमिशन का, सो दैट विल एनकरेज लॉट ऑफ डिमांड फॉर बायोफ्यूल. फिर 1G जो डोमिनेंस जो कंपनी का रहा है दैट विल कंटिन्यू इवन इफ दिस ब्लेंडिंग टारगेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, 20 से 27% हो जाएंगे या 30% हो जाएंगे, वहां पर भी काफी अपॉर्चुनिटी आएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो कि एविएशन फ्यूल में ब्लेंडिंग होगा, वहां से अपॉर्चुनिटी आएगी. एंड कंप्रेस्ड बायोगैस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वहां पर काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एंड एनर्जी ट्रांजिशन साइड में ऑफकोर्स प्राज जेनेक्स विल ड्राइव दैट ग्रोथ. Even global this biofuel alliance GBA that will also provide traction because बहुत सारी countries जो हैं अभी वहाँ they will also be implementing this ethanol blending program and even the natural gas blending program with the biofuel. So that will also drive opportunity for the company. Next slide, please. सो टोटल अपॉर्चुनिटी साइज जो बोलेंगे, जो हम लोग टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो साइज है करीबन $106 बिलियन का है. दैट्स अ वेरी बिग मार्केट एंड लार्ज पाई विल बी कमिंग फ्रॉम GBA विच आई हैव डिस्कस्ड एंड देन ऑफ कोर्स CBG जहाँ पर $36 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द 2G एंड बायो डीजल दीज अपॉर्चुनिटी ऑफ रफली $18 बिलियन. तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी गोइंग अहेड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कमिंस इंडिया. यहाँ पर हमारा बाय व्यू है. इस स्टॉक पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी नोन है एंड वी हैव बीन पुशिंग दिस स्टॉक फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड वी हैव बीन वेरी मच पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक. दिस इज अ टॉप पिक इन आवर कैपिटल गुड स्पेस.
Of course, Cummins India is the market leader in the power engine, and they have a very strong growth prospects across sectors. In fact, अगर देखा जाए तो not only just residential real estate or say commercial real estate, even data center and a lot of other manufacturing sites से जो capex आ रही है वहां पर भी काफी opportunity आ रही है. And so company is of course they are competing well ahead of their peers like cable Kirloskar oil engine. So in that way they are doing very well. In terms of margins also the margin profile is quite better than its peers like Kirloskar oil engine. और recently जो change in emission norms हुए हैं CPCB4 जो products आए हैं that is also has led to a strengthen their market position and also the margin profile. अगर लास्ट ईयर Q4 के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर जो 4% EBITDA बीट आया है बेस्ड ऑन आवर एस्टिमेट्स सो वो largely that was driven by the strong pricing levels that we have seen in the CPCB4 products. And of course, as I said, in the high horsepower engine, they continue to remain very strong. अगर इसकी ग्रोथ की बात करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में वी आर एक्सपेक्टिंग 13 to 15% CAGR इन रेवेन्यू एंड एबिटा एंड पैट. स्टॉक को हमने कुछ 40 टाइम्स जून 27 EPS पे वैल्यू किया है. दैट्स कमिंग टू अराउंड 3900 रुपीज फेयर वैल्यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yeah. So as I said, gross margin and EBITDA margins are better than the peer. In this graph, you can clearly see it's a EBITDA margin better than Coel in this is Kirloskar oil engine, and even gross margin because of the CPCV4 we have seen last 3 years, 4 years, it's been much better. So going ahead, if we see opportunity will come in. Next slide, please. Yeah. Of course, there's an increasing share of manufacturing GDP, so that will drive growth. In export side, if you see there is opportunity because of China plus one. Of course, the parent is also looking for more opportunity from other geographies. So these are all from the Cummins. Next, over to Sumit. Thank you very much. Thank you very much. Coming to Interglobe Aviation, we are recommending buy with a fair value of 6,700 rupees. I would like to share my experience. Recently, I booked airlines for my relatives. I had multiple options to choose, but even if the rates were lesser for other airlines, I chose Interglobe Aviation. Why is it so? Indigo, because of the flight doesn't get cancelled very often. Those are very rare instances. There is not much delays. In fact, they reach on time. Even if the charge marginally higher than the other, my comfort is far superior with Interglobe Aviation. So in nutshell, what I'm trying to say, as a customer, I have felt the services of this company and I feel very satisfied because of the quality of service they are providing and other factors and the wow factor which I get when I travel with it. So given this, when a customer is saying this, obviously the services talks about itself. So this is just to add further to it, based on these qualities and services with the company is among the fastest growing low cost carrier in the world. This is very important to understand. Now coming to India, domestic market share, if I look at it, which is an important parameter to look, then Interglobe Aviation has 64% market share. Obviously, there are fewer players in the industry, but still they are enjoying a significant market share in it. Now, FY25 and if you look, fleet of 434 aircraft provided scheduled services to 91 domestic, 40 international destinations. So the international and domestic exposure is decent. ATF prices have moderated sequentially. Now this is very, very crucial for healthy profitability of any aviation company. If your ATF prices, that is fuel prices, are coming down, your margins are expected to remain healthy. Next, please. If I
drill down to Q4 FY25 numbers, that will highlight the whatever examples I gave. Capacity is increased by 21%, passengers increased by 19.6%. If the services would not have been that great, I don't think more and more passengers would be traveling with it. Revenue from operations increased by 24.3%. Operating profit of 6,948 crore rupees, which is quite healthy, and the margins have improved meaningfully on a year-on-year basis. Net profit of 3,067 crore rupees, which is significantly higher as compared to the last year, fourth quarter. So that talks about the operational efficiency and other factors which the company is focusing on. Now, that was just one quarter. If I look at the full year, capacity is again increased by 13%, passenger increased by 11.1%, revenue from operation increased by 17.3%. Net profit, if you look, the net profit was around 7,258 crore rupees. This is that looks little lesser as compared to the last full year. But if you look at the margins, operating margin, which has improved from 25.5% in FY24 to 26.3% in FY25. So that is impressive. Next, please. Now, if you look, Indigo carried 3.2 crore passengers in Q4 FY25, which is like 20% year-on-year growth. Growth in international market was around 30% on a year-on-year basis. In FY25, the company carried 11.86, roughly around, for simplicity, let's take 12 crore passengers, which is quite a handsome number. In FY25, the company added a total of 67 aircraft on a net basis. Now, if you are able to add more aircrafts, because the demand is robust, but the problem is the supply side of aircraft. But if you are adding aircraft continuously, then obviously your capacity will increase, your profitability and your revenues will keep growing up. So far, international markets are concerned, international market remain a key focus area for Indigo. India remains highly underserved with a lower market share of Indian airlines. This presents the company with a huge opportunity to expand into further markets. So as I mentioned about the price, next slide, please. The ATF prices are correcting. So this chart shows particularly the recent one. There has been continuous decline in ATF prices. That is significantly positive, not only for this company, but for the sector. But you at the same time, you have to see whose margins and whose top line is growing. So I believe in this space, Interglobe Aviation is the best company you can look for. Next, please. So over to Veer now. Thank you, Sumit sir. Hello to all. Ujjivan Small Finance Bank is the next stock which we'll briefly discuss. So on the stock, we have a buy rating with a fair value of 55. Now, Ujjivan Small Finance is a small finance bank, and therefore they are obviously in the business of lending. But let's take a minute and understand what do they do. So now it's important to understand who do they lend. So on the left side of the table, you can see their loan mix. So you can see microfinance constitutes 41% of their loan book. Individual loans is 16%. Housing is 23%. Mid-sized business is 6%. FIG lending, which is nothing but the financial institutional group lending. Here, basically, they lend to other smaller microfinance and NBFCs. So this is their loan mix. Now, in this, you will see that microfinance and individual loans, these two segments are unsecured in nature, and the rest are secured in nature. So 41 plus 16%, which comes to 57%. So 57% of their book is unsecured, and the remaining 43% of the book is secured in nature. Now that we know who they lend, it's important to also understand where do they lend. So on the right-hand side, we have a geographic mix of Ujjivan Small Finance Bank. Here we see that Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal, Maharashtra, Gujarat, these are some of the important states for the bank. And here you would appreciate that no each state has more than 15% of the business coming from them.
So geographically, the SFB is quite diversified, and it's important to have such a good geographical mix because because if a lending company is concentrated too much into a single state or two, and if something bad happens into that state, then the entire business could go out for a toss. Even here on the region mix, we see that north, south, east, west, all the regions are fairly spread out, and businesses coming from across India. Next slide, please. Now that we know that around 41% of the company's business comes from microfinance, it's important to understand the shape of MFI currently. So we all know that microfinance segment has been going through a lot of pain from the past 4 quarters. On the left-hand side chart, you can see that March 24 onwards, say, asset situation of the entire sector has been very bad. You can see the ratio has been going up. It is going up means it is bad, and it is bad for almost all the banks, NBFCs, small finance bank who are into the business of MFI. Now, as this asset quality situation is deteriorating, what this does is that credit cost of these companies, of these banks go up. When the cost goes up, obviously the net profit goes down. And this has been happening for these entire lenders who are into this space. That in the last 2-3 quarters, we have been seeing net profitability seeing a sharp decline. And due to this, the share price have declined, and due to this, the valuation multiple which these MFIs have been trading in has gone down sharply. This also means that they are now available at a very cheap valuation. And when they're available at a cheap valuation, as smart investors, we want to look at good opportunities which are available at these valuation. Next slide, please. And this is where we believe Ujjivan Small Finance is a good tactical MFI bet at this stage. Now, microfinance essentially is a cyclical sector, and therefore it's important to catch the cycle right. How do we catch the cycle right? It is a three-stage process. Number one, the GNPA should be high. Number two, valuation should be low. And number three, you should have incremental trends of improvement visible in the MFI segment. So is the GNPA high for Ujjivan? The answer is yes. Is the PB multiple low? The answer is yes, it is trading at its below a long-term valuation. And are we seeing incremental trends of improvement for Ujjivan SFB? The answer is also yes. You can see from the below two charts that the portfolio at risk for Ujjivan, which was going up, it peaked out in Q3, and now from Q4 onwards, we are seeing signs of improvement. Also, on the right-hand side of the table, you can see uh, efficiency in getting their money back was going down, and it bottomed in Q3 at 95%, and in Q4 again now we are seeing signs of improvement. So we are seeing signs of incremental trends of improvement, and therefore all the three boxes are getting ticked for Ujjivan SFB. Next slide, please. Also, Ujjivan has been an SFB which has over the years shown good growth. If you look at their long-term growth trends also, be it their gross loan book, uh, asset quality, or even their margin profile, they all have been pretty good. The bank trades at a valuation of 1.2 1 year forward, which is quite attractive at these levels. MFI sector will take a quarter or two for the recovery to officially begin. And therefore, we think we are at the right stage to enter into Ujjivan. And we believe this can give you good returns in the medium term. And therefore, it's a stock which we recommend and like at this point in time. That's it for Ujjivan SFP. So that was our presentation. We will now open the floor for Q&A. So go ahead and drop your questions in the chat box. I'll start with the questions we already have. So Devanshi Dholia is asking, what is the upside in CDSL? Amarjeet, can you take this query, please? ओके सो ऑलरेडी हमारा उसमें एड रेटिंग था और टारगेट वाइज अप्रॉक्स 1500 का था विच वाज अचीव्ड एंड हमें अभी भी ये स्टॉक अच्छा लगता है एंड वी आर पॉजिटिव ऑन दैट एंड थोड़ा भी ये स्टॉक में करेक्शन होता है तो आई से कि आप ये स्टॉक को नीचे पे थोड़े करेक्शन पे लीजिए और अभी आगे इसका जो मल्टीपल है और जिसके टारगेट प्राइस है आगे के नंबर्स जाएंगे तो हम उसके ऊपर डिसाइड करेंगे बट अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक को फायदा होगा ही and apart from that the stock is the market leader in that particular demat account so overall we are positive but अभी हमारा टारगेट प्राइस अचीव हो चुका है और हम बोलेंगे कि थोड़ा भी स्टॉक करेक्शन होता है तो उस पर आप एक्यूमुलेट कीजिए और बीएससी पे भी हमारा कवरेज नहीं तो वी कांट कमेंट ऑन दैट Noted. Thank you, Amarjeet. Moving on to next question. Uday Sharma is asking, what will be the future in the textile industry?
Pankaj sir can help with this query. Yeah, sure. So textile industry, if you see, no, currently because of the tariff related uncertainty, we have seen even the management committee, of course, we do not cover any stock in the space, but the management commentary is also not very certain on the how the FY 26 will look like because of the US tariffs. I mean, and every day we see some news coming in from on that. So some deals are happening with some other countries and even India का जब एक बार deal हो जाएगा and all, then we'll get some clarity. Or for now, because of all these tariff issues, there is a issue on the discretionary demand in US and that is delaying the overall orders also for several companies. लेकिन एक पॉजिटिव साइड में रिसेंटली यूके के साथ जो एफटीए हुआ है so that is somewhat positive for the industry as such because now the Indian players will be competitive or will be at par with the other countries who were getting the preferential tariffs earlier. अभी अगर ईयू के साथ भी और टैरिफ्स एफटीए हो जाती हैं तो देन अगेन इट विल बी पॉजिटिव फॉर द सेक्टर बट इसमें अभी कोई कंपनी हम कवर नहीं करते हैं दैट इज द केस. Thank you, Pankaj sir. There's one more question for you. Dogesh is asking, sir, why L&T is falling? L&T is falling. Rather, I believe it has done well post results. And I can tell you the long-term view, of course, we have ad rating on the stock. And अभी जो stock है, currently it's trading near our fair value of 3650. So company ने जो outlook दिया है for FY26, that is on the positive side. If you see, they have guided for roughly 13% ordering growth. And that's on adjusted basis for the ENC business. एंड अगर प्रोस्पेक्ट पाइपलाइन की बात करेंगे तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है रफली 19 लाख करोड़ एंड ऑफ कोर्स लार्ज पार्ट इज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट. डोमेस्टिक साइड थोड़ा सा वीकनेस है बिकॉज इसमें जो प्रोस्पेक्ट पाइपलाइन ज्यादा जो ग्रोथ आया है 60% ओवरऑल ग्रोथ है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इज कम फ्रॉम द इंटरनेशनल साइड. लेकिन मार्जिन ऑल्सो द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग इंप्रूवमेंट इन मार्जिन सो 20 बिप्स इंप्रूवमेंट इन द ईएनसी मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग. स्टॉक को हमने 22 टाइम्स FY27 जो कोर अर्निंग्स है उस पर वैल्यू किया है तो हमारे फेयर वैल्यू 3650 है. अगर और डिक्लाइन होता है तो ऑफ कोर्स यू कैन ऐड इवन फॉर लॉन्ग टर्म दिस लुक्स गुड. Thank you, Pankaj sir. Moving on to next question. Priyanka Soni is asking view on Dr. Lal Pathlabs कब चलेगा? So I'll try and answer this question. So Dr. Lal Pathlabs is one of the most trusted diagnostic chains in India, and they have been showing steady progress. Last quarter, they saw 9% growth in test volumes, and what's interesting is that the growth came in with a better mix. So now, not just more tests, but better quality ones, which improves realizations. A bigger contributor here is their Swasth Fit packages. Now, these are preventive health checkups that are more and more people are opting for, and it now makes up 26% of their sales. So going forward, we are expecting volumes to pick up more in suburban and smaller towns where they are expanding actively. The company is guiding for 11 to 12% sales growth in FY26, and that seems achievable given their scale and brand recall. They are also working on expanding their illness-focused bundle test offerings, which should give an additional push. Even though there's a leadership transition happening, execution seems to be on track. So Dr. Lal is a pretty solid story in a diagnostic space. We have an ad rating on the stock currently with target price of 3,250. Priyanka, I hope this answers your query. Moving on to next question. Revana Suresh is asking, can I buy BHEL for long term? Again, Pankaj sir can answer your query. Yeah, so BHEL, if you see, even we discussed earlier also, on this particular stock, we have been negative. There are more, it's not just a valuation thing, near-term valuation, or it's more to do
there would be because earlier, if you see, the company used to be the primarily the power equipment supplier, particularly for the thermal side and all. So that facility is of course underutilized, and you see the ordering on that side, though it has picked up in near term, but may not be sustainable over a long period because of the increased focus on the renewable side. और उसके अलावा भी अगर देखेंगे तो recent performance भी it was weak only, so they had missed our overall execution estimates. So there was a 14% missed in the estimates as well. And even working capital is also a concern. So overall, we have a sell rating on the stock with a fair value of 115. Thank you. Next couple of questions are from IT space for Sumit sir. Kapil Aseri is asking, can you give bit of insight on Coforge and what is the future of IT industry? Yeah. Coforge, we have been time and again telling you that we are very positive about the business, about the management of the company, and we have indicated that one can always add this stock to their long-term portfolio. Now, what's happening is that despite so many hard macros, particularly if you look at the client-centric regions, US and Europe, there are a lot of uncertainty, and most of the large Indian IT players are finding it difficult to get orders. Even if the pipeline is good, they are finding it difficult to convert it into order. But Coforge has proven themselves very strong time and again. At multiple occasions, we have seen that despite these headwinds, they have been able to grab either new orders or better client mining. So the strategy is very, very focused out there. They have the niche which they have created for themselves, and that is why they are getting benefited out of it. Going forward, we remain continuously maintain our positive view on the stock, particularly about the management and the way they run the business. The execution power is extremely good. Sales team is extremely good, and that's why they have been able to get more and more new clients, and at the same time they are adding. They are doing better client mining. So one can remain positive on the stock from a longer term perspective. Thank you, Sumit sir. Now, due to time constraint, I'll take last couple of questions. Vedant Shukla is asking for view on Hindustan Zinc, and Bhavesh Mehta wants to know views on Protean. I think Shrikant sir can take these two. Yeah, sure. See, like for Hindustan Zinc and Protean, I think, see, both these companies have completely, I can say, under very strong news flow. स्पेसिफिकली अगर हम हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है, इसमें अगर इसके फंडामेंटल्स के बेसिस पे अगर इसे रीड करने की कोशिश करेंगे तो वैसे करंटली ये फेयर वैल्यू के काफ़ी ऊपर है। बट इसके अंदर के जो बिजनेस की अगर बात करें तो ये जो बिजनेस है इसमें एक इसकी माइंस के बिजनेस में जो एक कंट्रीब्यूशन आता है वो सिल्वर का आता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जब सिल्वर में तेजी होती है तो हिंदुस्तान जिंक में भी हमने तेजी देखी है। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। और इस बार आपने देखा होगा कि सिल्वर कुछ दिन पहले 95,000 के करीब था, अभी 105,000 के करीब आ चुका है। एंड दिस टाइम यानी कि इन लास्ट 3 मंथ्स इफ यू सी, गोल्ड जो था वो सिल्वर को आउट परफॉर्म कर रहा था। अभी क्या हो गया कि वापस से हमने तेजी देखी है, बट इस बार जो सिल्वर का जो पेस है वो लिटिल बेटर है या तो लिटिल हायर है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि सिल्वर शायद गोल्ड को क्रॉस करके थोड़ा और अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। इसी वजह से क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर माइंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसमें हमने आज स्पेसिफिकली तेजी देखी। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान जिंक ने एक अच्छा बेस बॉटम जो बनाया था उसमें से एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनाया है। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है ये स्टॉक 530 540 तक जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो यानी कि मोर देन 12 मंथ्स का व्यू हो तो इसमें बने रहे, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें डिविडेंड भी आते रहता है और एक ओवरऑल जो कंपनी है वो काफ़ी आई कैन से प्रॉपरली मैनेज्ड है।
तो बिल्कुल इसमें बने रहे। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि फॉर प्रोटीन, प्रोटीन में क्या हुआ है, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ फ्लो में सभी ये दोनों कंपनीज थी, और प्रोटीन का अगर आप न्यूज़ फ्लो देखें तो काफ़ी एपरेंट है कि इसे जो एक नई ऑर्डर जो शायद मिल सकता था, उस टेंडर में इसने लूज किया है। तो पैन के जो पैन 2 का जो एक इसे टेंडर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, किसी आई एम टू से गवर्नमेंट ने किसी और गवर्नमेंट कंपनी को अलॉट किया है, और इसी वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी में हमने एक सेल ऑफ देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका ये बिजनेस था पैन का, आ, ये इस पर्टिकुलर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से, यानी काफी बड़े परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करता है, और इसी वजह से हमने ये सेल ऑफ देखा है। ये जब स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद के जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बने थे वो तकरीबन 900 के करीब के थे। इस बार भी आपने देखा है कि आफ्टर दिस न्यूज फ्लो स्टॉक में एक सडन क्रैश आया और स्टॉक अभी 900 के करीब आके स्टेबल हो रहा है। आई एम ऑफ द व्यू कि ये स्टॉक थोड़ा और वक्त निकालेगा इन्हीं लेवल्स के करीब, बट अगर यहाँ से बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर रिबाउंड अगर आता है तो हमें क्लोज टू 1100 के करीब, यानी कि 1050 या 1100 के करीब अपने पोजीशंस को कम करना जरूरी है, क्योंकि अभी जब तक कंपनी कोई नई ऑर्डर बैग नहीं करता तब तक हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में हायर लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो तो हायर लेवल्स पे से बेच के वापस लेने की कोशिश करें, और अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अगर करना हो तो मैं कहूंगा कि फॉर द टाइम बिंग इसमें इन्वेस्टमेंट आप ना करें। फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। Thank Over you, to you. Shrikant sir. Sir, with this, we have reached the end of the webinar. Would you like to give any closing remarks? Yeah, I think, see, it's very important to understand that where the markets are going and whether the market can surpass the level of 25,000 or not. Because finally, see, the trend of the market is equally important. Right now, the market is in the range. It is not crossing the level of 25,000. It is not breaking the level of 24,500. And because of this, a lot of traders, they are losing a lot. Uh, but at the same time, if we consider the cash segment of the market, then there we are seeing good amount of activity or buying interest in mid and small cap companies. So whenever we see market in a range for a longer period, for a longer extended period, most of the time we start seeing activity in specific stocks or specific sectors. तो हमने यही ट्रेंड देखा है पिछले 10 दिनों में। कल के दिन में हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स ऊपर थे, अभी हमने देखा है कि कुछ फार्मा स्टॉक्स में तेजी बन रही है। तो ये ट्रेंड ऐसे ही बनता ही रहेगा, बट आपका जो एक ओवरऑल मैं कहूंगा कि व्यू होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपके पास ऐसे मार्केट में क्वालिटी स्टॉक्स में क्वालिटी स्टॉक्स का ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टॉक इस पर्टिकुलर मार्केट में ले लोगे तो फिर वो आपके लिए काफी सिर दर्द हो सकता है। उसका रीजन ये है कि मार्केट, जैसे मैंने कहा और जैसे अभी अमरजीत ने भी एक्सप्लेन किया, कि मार्केट काफी एक्सपेंसिव है, और जब भी मार्केट एक्सपेंसिव होता है तो उस मार्केट में हमें अप एंड डाउन की एक्टिविटी देखने मिलती है। मार्केट जब करेक्शन में आता है तो वो स्टॉक गिरते हैं जो स्टॉक वीक है, मार्केट जब रिकवर होता है तो वो स्टॉक बढ़ते हैं जो स्ट्रांग है या तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बेटर है। तो ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा लेट्स से फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, जब तक नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स नहीं आते तब तक, तो क्या होगा कि जो वीक स्टॉक है वो और वीक होंगे, जो स्ट्रांग स्टॉक है वो और स्ट्रांग होंगे। तो इसी वजह से जो भी स्टॉक हम स्कैन कर रहे हैं दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन देयर पेडिग्री, बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल quality I can say, and accordingly if you invest I'm very much sure that you will end up with making decent returns on your investments. That's all. Thank you. Thank you, Shrikant sir, and thank you everyone for joining our webinar today. We hope you found our webinar insightful. Your feedback is important to us, so please share your thoughts in the comment section below. A quick reminder before we wrap up, follow us on Telegram, Instagram, and Twitter for regular research updates and stock ideas. Stay tuned for our upcoming webinars. Thank you once again. Happy investing. See you next time. Thank you.